Okay, so hi everyone. This is your anchor Lakshmi, and once again we are back on YouTube with our once again live exclusive session. So एक बार फिर हम सभी लोग आ चुके हैं आप सभी के बीच हमारा एक और लाइव सेशन लेके. सो आई नो कि आज संडे है और आज जो होता है दिन थोड़ा सबका मूड रहता है कि यार आज तो फन डे है मतलब लेकिन उस फन डे में थोड़ा सा अगर कुछ 1 आवर हो जो जिसमें हम लोग लर्निंग भी कर ले तो कितना सही रहेगा. व्हाट्स अ सलोनी. सो यस लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन. तो आप सभी लोग ऑलरेडी इस बंदी को जानते होंगे. सो शी इज योर होस्ट सलोनी. सो सलोनी, कैन यू से हाय टू एवरीबॉडी? कम ऑन. Hi everyone, this is Aloni, your host from Team Pankhuri, and I hope everybody is doing absolutely great. Exactly. Everybody is doing absolutely great because this is Sunday. I am saying it again and again. And आज के दिन ना मैं भी बहुत खुश होती हूँ क्योंकि आज का दिन सच में एक फन डे टाइप का होता है कि दिन भर से मस्त मस्ती करो. लेकिन बेस्ट पार्ट क्या होता है कि उसमें ना थोड़ा सा हम कुछ सीख भी लेते हैं पंखुरी के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आज जो हमारा सेशन होने वाला दैट इज सोप मेकिंग. तो मैं ना सुबह से ही पता है मेरे मेरे मन में बस एक ही एड आ रहा है. आप सभी ने एक एड देखा होगा, आई गेस सलोनी आपने भी देखा होगा. वो वाला जो एड है, तुम हुस्न परी तुम जाने जान वाला जो एड है वो देखा है आपने? हाँ, तो बिल्कुल, इसमें मैंने ना बिल्कुल मैं देखा है. हाँ, तो मैं क्या सोच रही थी, ये तो भाई किसी सोप का एड है, ठीक है. लेकिन अब हम जो मार्केट के सोप्स जो मार्केट के सोप्स हम परचेज करके लाते हैं उसको जब यूज करते हैं तो उससे ना हमारे जो इतने सुंदर सुंदर फेसेस होते हैं वो सब ना रफ हो जाते हैं. तो मैं ये सोच रही थी कि यार अब हमारे पास खुद के बनाए हुए सोप्स रहेंगे जो हम खुद यूज कर सकते हैं. तो मेरे ना उसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था उस एड में. जो स्टार्टिंग है, तुम हुस्न परी तुम इतनी हंसी तुम इतनी जवा क्या रूप खिला, तो सौंदर्य साबुन जो निरमा बोलते हैं ना, तो उसके जगह अपन ये बोल सकते हैं सौंदर्य साबुन अपना. सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है. अब हम लोग अपने आप बनाएंगे. वी विल मेक यस. सोप ऑल बाय आवरसेल्व्स और उसके बाद हम लोग उसको यूज करेंगे एंड विल बी ऑल जैसा हमें चाहिए कस्टमाइज सोप हो जाएगा हमारा. जिसको पता है, जिसको जिस चीज की नीड है, जैसे मेरे फेस को अगर थोड़ा मॉइस्चराइजर की नीड है तो हम उसमें वो चीज ऐड कर सकते हैं. मतलब ये मेरे को नहीं पता है बट अभी हमारी ट्रेनर आरोही बताएंगी. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर ट्रेनर आरोही. सो आरोही, कैन यू से हाय टू एवरीबॉडी? Everybody is eagerly waiting for your class, so yes, you can say hi to everyone. Hello. So yes, one more thing, let me tell you that Arohi हमारी न्यू ट्रेनर है जिनका फर्स्ट क्लास है पंखुरी के साथ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड शी इज रियली वेरी टैलेंटेड. सो मैंने इनके काफी सारे ना वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं, तो काफी टैलेंटेड है मैम. तो आज हम लोग इनसे सीखने वाले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी. सो यस, यू कैन इंट्रोड्यूस वंस अगेन. Hello everyone, I'm Arohi Shadija from Ivana Soap Studio, and today I am going to be conducting an basic introduction to soap making class. So without wasting time, let us start. Yes, definitely. So we will not waste much time because I could see कि काफी टाइम से ना हमारे पार्टिसिपेंट्स बोल रहे थे कि यार स्टार्ट करो क्लास, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर क्लास. तो ना हम कभी भी अपने पार्टिसिपेंट्स को नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा वेट करें. सो डोंट बी वरीड, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास. एंड यस सलोनी, ओवर टू यू, सो यू कैन स्टार्ट द क्लास नाउ. Yeah, thank you so much, Lakshmi. Arohi, I will Thank just you. take a minute and we'll just let them know about some basic things and then we will start with the session. Okay? So, hi everyone. This is Saloni, your host from Team Pankhuri, as you all know, and आज हम सीखने वाले हैं soap making. So, before starting the session, there are just few things I want to tell you all about and then we will start with the session. Okay? So, the very first thing is that we are going to have this session in both Hindi and English. हमारा पूरा सेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, तो आपको लैंग्वेज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है. आरोही विल बी टीचिंग इन इंग्लिश एंड आई विल बी ट्रांसलेटिंग द सेम इन हिंदी. तो आरोही हर चीज बताएंगी इंग्लिश में, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में. सेकेंड थिंग इज, if you want the PDF or you want the product list or anything, that will be there on the Pankhuri app. You can go to the Pankhuri app and you will find the PDF and everything there. तो जो PDF वगैरह है वो आपको पंखुरी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे. आप वहां पर जा करके पंखुरी ऐप पे PDF चेकआउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. हर चीज जो है वो आपको पंखुरी ऐप के ऊपर मिल जाएगी.
and ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो you can check out there. Now the last thing is that if in case you have any question or queries during the session, you can just let us know in the comment section and we will work on that. Okay? So कोई भी question or query अगर आती है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं. मैं वो सारे questions आरोही से पूछूंगी and हम try करेंगे कि हम आपके maximum to maximum questions को solve करें. Last thing is that it's just a little announcement that as you know that the super games are still going on. So I hope that you all have already joined it. And as you know, there are great prizes over there. The first prize being the Dyson, second being the iPad, and the last one being the Macwala Good Hamper. So I hope that Beauty you all hamper, have yeah. joined. Yeah, so I hope that you all have joined us there. If in case you haven't, so we will provide the link you for that too, and you can join us there. Okay? तो कल हमारा नेक्स्ट सेशन भी है हमारा सुपर गेम्स का. आई होप कि आप सभी ने हम लोग को वहां पे ज्वाइन किया है. अगर नहीं किया है तो प्लीज परेशान मत होइएगा, लिंक आपको भी मिल जाएगी. ओके, सो तो यस, सलोनी, you know what was I thinking कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुपर गेम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है. तो सभी का भी ऊपर से जा रहा होगा कि यार क्या सुपर गेम्स, क्या सुपर गेम्स. तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप लोग वेट करिए. जैसे ये सेशन एंड होता है तो लास्ट में सलोनी आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का डिटेल देंगी. सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. बट सबसे पहले हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यस सलोनी, वी कैन स्टार्ट नाउ. यस, सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ओवर टू यू आरोही. Okay, so first thing first, why soap making? We get so many things, so many soaps, different varieties, body washes in the market. Why handmade soaps? Many reasons. Handmade soaps are entirely chemical free, harmful chemical free, and they can be customized according to your skin types. What we get in the market is so full of chemicals. Okay, and that causes itchiness, scratchiness in many people. So, but handmade soaps that we make according to our skin types, or we buy handmade soaps according to our skin type, does not causes any skin itchiness or any harmful effects to your skin. Okay. Second is we can customize, we can add products according to our benefits. We can give it so many beautiful designs. Market soaps are just so bland. If you have seen any soap, they are just so bland, this oval shape or a square shape or a rectangle shape. But if you have seen handmade soaps, it's like an art. So many different shapes and varieties you get. And last is there are absolutely no preservatives added in the soap. So and in the market soap, so many preservatives are also added. Okay, so this is why we make handmade soaps. ओके, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये होती है कि हमें हैंडमेड सोप्स की जरूरत क्या है. तो कुछ बेसिक चीजें जिसके लिए हम हैंडमेड सोप्स को यूज करते हैं. सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं. जितने भी हार्मफुल आपके केमिकल्स होते हैं वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो ऑब्वियसली कोई भी चीज जो हार्मफुल केमिकल से फ्री है वो आपकी स्किन के लिए एंड आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी. सेकेंड थिंग इज, जो आपको मार्केट में जो सोप्स मिलते हैं वो जनरली कस्टमाइज सोप्स नहीं होते, जेनेरिक सोप्स होते हैं. तो जब आप हैंडमेड सोप्स की बात करते हो तो वो आप उसको अपने स्किन के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज कर सकते हैं. हो सकता है आपको मॉइस्चराइजेशन ज्यादा चाहिए होता है, हो सकता है आपको कुछ परफेक्ट स्मेल्स होती हो जो आप प्रेफर करते हो. तो ये सब चीजें आप मार्केट वाले सोप में नहीं कर सकते हो, बट एक कस्टमाइज सोप में या जो आप खुद बनाओगे उसमें आप कर सकते हो. लास्ट जो चीज होती है वो ये होती है कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये और ज्यादा ही अच्छे होते हैं हमारे स्किन एंड हेल्थ के लिए. यस आरोही. Yes, let me share my screen with you all so all of you can see the PDF. Now, basically, there are three methods of handmade soap making. The first is the first one is the cold process method. What actually soap is, it is a combination of oils and butters combined with NaOH. What is NaOH? NaOH is caustic soda. When we combine both of these things,
we get a product known as soap through the saponification process. So this is for this saponification process to take place, the soap needs to be cured for 4 to 6 weeks. Okay, so this is the cold process method. Second is the hot process method. Now, hot process method is the same method. The oils and lye, the NaOH, caustic soda, is also called as lye. The oils and lye need to be combined, but this combination takes place in a crock pot, or what you called as a oven or a cooker. It needs to be cooked and it takes less time for curing. Now, the method that we are going into detail and which is considered to be an easier method is the melt and pour method. In melt and pour method, what basically happens is the saponification process is already has been done. We get pre-made bases. Okay, these are the bases which we get. This has the saponification process is already done in these bases. We just have to cut these blocks and melt it in a microwave. Simple, like how you use the microwave without adding anything. Just you have to melt it in a microwave, and you can basically add fragrance and colors to it and dry ingredients also, and you can use the soap. Saloni? Yeah, okay. So जब हम सोप्स की बात करते हैं तो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं सोप बनाने के. सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कोल्ड प्रेस प्रोसेस. कोल्ड प्रेस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो बटर्स और ऑयल्स होते हैं आप उनको मिक्स करते हो NOH के साथ. ओके, NOH एक टाइप का क्या होता है? It's actually lye. ओके, lye. ओके. तो आप अपने बटर्स और ऑयल्स को मिक्स करते हो NOH के साथ, एंड देन उसके बाद हम उससे बनाते हैं सोप्स. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं सोपिफिकेशन. एंड इस पूरे प्रोसेस में आपको कम से कम जो सोप बनता है उसको 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना. 4 to 6 weeks, Saloni. 4 to 6 वीक्स के लिए आपको उसको सेट होने के लिए रखना पड़ता है. नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने अभी पढ़ा, यानी कि हॉट प्रोसेस. हॉट प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें भी सेम प्रोसेस जो कोल्ड प्रोसेस होता है वैसा ही होता है, बट इसमें आप क्या करते हो, इसमें भी आप ऑयल्स और बटर को मिक्स करते हो NOH के साथ, एंड आप इसको क्या करते हो, इसमें आपको कुक करना पड़ता है. आपका जो NOH और बटर का जो मिक्सचर है आप उसको थोड़ी देर ओवन में या कुकर में आप उसको वो कुक करोगे, एंड देन उसके बाद आप उससे सोप बनाते हो. ओके, लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है मेल्ट एंड पोर प्रोसेस, जो हम आज सीखने वाले हैं. एंड मेल्ट एंड पोर प्रोसेस में क्या होता है कि आपका पहले से वो जो सोपिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो बना हुआ होता है. ओके, मतलब वो पूरा प्रोसेस डन होता है. एक आपको प्री मेड सोप बेस मिलता है जिससे आप प्रॉपरली बाद में सोप बना सकते हो. सो आज हम मेल्ट एंड पोर प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे. यस आरोही. Okay, so now what is the melt and pour technique? Melt and pour technique is, I've shown you the base. This base we just cut into small blocks. We keep it in a microwave safe bowl and we melt it. These bases are available in many varieties. But the 2 basic varieties that we generally use are the clear base and the goat's milk base or the white base. This is the clear base. This is the clear base, and this is the white base or the goat's milk base. With the help of these 2, all different bases can be made, but still, if we make soap commercially, we get so many different bases also, like aloe vera base, charcoal base, neem base. What happened in these bases, the ingredients, like in the aloe vera base, the ingredient aloe vera is already added. Now, why is it added? See, in melt and pour technique, in this soap base, we can't add any liquid ingredient. Okay, we shouldn't add in any liquid or any fresh ingredient. We can only add colors and fragrances. Fragrances are essential oils or aroma oils, and we can add up to a certain percent
powders or dry ingredients of anything. Like if we want to make a neem soap, we can add neem powder. If we want to make a haldi chandan soap, we can add haldi or chandan powder in it. Absolutely no liquid material can be added in this, and no fresh ingredient also. One thing I want to clear here, if you have seen so many soap bases, handmade soaps in the market, many of them have rose petals added on it, or hibiscus petals, or lavender buds. Please don't use those soaps. Okay, why? Because all these fresh ingredients are rotted in the soap. After like 2 to 3 days, all these things are rotting in the soap, and you don't want to use those rotting things on your body, obviously, right? So just an advice, although you will see many of these soaps in there, but don't use fresh flowers on your soap. Okay, so melt and pour, we cut blocks, we melt in a microwave, we add colors and fragrances and additives. Additives are dry powders only, and we can pour it into silicone molds. Okay, please use only silicone molds. Soaps are much easier to get out from silicone molds. Do not use plastic molds. Like in chocolate, we use plastic molds. Please do not use plastic molds, because the soap will get stuck in that and you'll not be able to take it out. So you can buy a silicone mold from the market, and you can use that silicone mold. ओके सो जो आज हम सीखने वाले हैं मेल्ट एंड पोर टेक्निक, उसका क्या होता है उसमें कि आपको एक प्री मेड सोप बेस होता है, उसके साथ आप बनाते हो अपना सोप। उसमें क्या होता है, आप वो प्री मेड सोप बेस को लेते हो, उसको आप कट करते हो, एक माइक्रोवेव सेफ बोल में रख करके उसको आप मेल्ट करते हैं। मेल्ट देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या हम गैस पे कर सकते हैं? सो आरोही, कैन वी डू इट ऑन द गैस टू? Not on the gas stove, direct heat nahi. Not we cannot give soap base direct heat. What we can do, if you don't have a microwave, you can put it on a double boiler oven. Okay, what in that what we need to do, we need to keep a big pot on the gas or the induction oven, put water in it, let it boil, and keep another pot on above the first pot, boiling pot, and then you can add the base on that. Not on direct heat, just a steam needs to be there. One thing, it takes a lot of time. The work that can be done on a microwave in like 30 seconds, it will take 1 to 2 minutes in that. So you have to be more patient in that, but otherwise you can do it. ओके सो अगर आप चाहें तो आप गैस पे भी कर सकते हैं। गैस में आपको डबल बॉयलर का यूज करना पड़ेगा, एंड आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बेसिस की, तो 2 तरीके के बेसिस आते हैं, क्लियर बेस या फिर वाइट बेस या गोल्ड बेस जिसे कहते हैं। एंड आप इन 2 बेसिस का यूज करके आप एक कस्टमाइज सोप बना सकते हैं। आपको बस कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आप इसमें किसी भी तरीके का लिक्विड नहीं यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ लिक्विड इन इट। सेकेंड, जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है वो ये कि आप कोई भी फ्रेश चीज नहीं यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश पेटल लीफ, ये आप नहीं यूज कर सकते हैं। जो ड्राइड होते हैं आप वो एक बार के लिए फिर भी यूज कर सकते हो, बट फ्रेश कुछ भी नहीं यूज कर सकते हो। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपको इसमें कलर्स वगैरह ऐड करने होते हैं तो आप पाउडर कलर्स यूज कर सकते हो। आप जो सोप बेस्ड कलर्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, बट लिक्विड कलर्स वगैरह आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। Colors, Saloni, sorry to disturb you. Colors are a different thing. We'll get on it. But colors actually liquid bhi hote hain, so we'll get on it on the other in the next slide. But liquid colors use kiye ja sakte hain. Any other liquid is not allowed. Like many people add any oil, extra oil, or vitamin E, or any butter, extra butter is added. Those are not advisable, but liquid colors use kiye jate hain. Okay. So yes, I think we have done with the technique also. Anything else is left? Just next we'll go.
Now for melt and pour, what will you need? Basic things, some very basic thing. A microwave or a double boiler, as a microwave safe bowl. Okay, a couple of spoon. I would advise to keep all the soap making utensils separate from the ones that we use in the kitchen for food making. Okay, basis, clear, and goat milk. And what you will need is a weighing machine like this. Okay, this is a weighing machine. Fragrances, these are soap fragrances you get on the vendor list that we will be providing in the PDF, and you can also easily get from Amazon. These are soap fragrances only. Okay, and colors, these are soap colors, these are soap dyes, and silicone molds. Okay, these are the basic requirements for soap making. Okay. So soap making के लिए कुछ basic requirements हैं. One is double boiler या फिर microwave. उसके बाद आपको एक माइक्रोवेव सेफ बोल चाहिए होगा, कुछ स्पून्स चाहिए होंगे, एक मेल्ट एंड पोर बेस चाहिए होगा क्योंकि हम मेल्ट एंड पोर वो बनाने वाले हैं. एक आपको इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन चाहिए होगी हर चीज मेजर करने के लिए. फिर आप उसमें जो भी एडिशनल चीजें ऐड करना चाहते हैं लाइक फ्रेग्रेंस, कलर्स, तो ये चीजें आपको चाहिए होंगी. एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक सिलिकॉन मोल्ड, क्योंकि आप जो अपने उसको शेप देंगे सोप को वो एक सिलिकॉन मोल्ड में ही देंगे. Yes, sir. Next, I have given so many list of raw material that can be added. Like we can add coffee, dry coffee powder. We can add up to a certain limit. Why I am emphasizing on the up to a certain limit? Because if you put more than the limit, like if you are making a soap bar of 100 grams and you put more than 5 or 7% of a powder, then what happens is the lather of the soap, जो झाग बनता है soap का, the lather of the soap will reduce. So it is advisable to put any dry powder in up to 5 to 7%. Okay, like we can use coffee powder, charcoal powder. Charcoal is good for acne. Orange peel powder, orange peel many of the people make at home also. Many of the clays we can use, like multani mitti is a clay, and calamine clay. These we can add. Salts, we can add some salts, not the basic table salt that we use at home. No, Epsom salt or Himalayan salt, very fine crystal and very low quantity we can use. Cocoa powder we can use. So I have given you a list of so many things that you can add and the benefits of each. We'll not be going into benefits of each because it will drag on. So you can read it on the PDF. Yes. तो अभी आप जैसे देख सकते हैं आरोही ने बहुत सारी चीजों की लिस्ट दी है कि आप अपने सोप में क्या ऐड कर सकते हैं. एंड आप जैसे आरोही ने बताया था कि आप एक सर्टेन लेवल तक ही केवल जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एक 100 ग्राम्स का सोप बना रहे हैं तो आप उसमें 5 to 7% ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं. उससे ज्यादा मत करिएगा, अदरवाइज आपका सोप सही नहीं बनेगा. एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आरोही ने पूरी लिस्ट दी हुई है चीजों की कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं. ऐसे आरोही ने पूरी लिस्ट बना के रखी है. ये पूरा PDF ऐप पे अपलोडेड है, आप ऐप पे जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं. ओके, यस. सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द डेमो पार्ट नाउ. Yeah, we can move on to the demo. Just give me a minute to set up my camera for the demo, Saloni. Yeah, sure, works. So yes, ladies, जब तक आरोही अपना कैमरा सेटअप कर रही हैं तब तक if in case you have any question or queries just let us know. एंड उसके बाद हम अपना लाइव डेमो स्टार्ट करेंगे जहां पर हम सीखेंगे कि आप एक्चुअल में सोप कैसे बनाते हैं इन सोप बेसिस को यूज करके. ओके, so abhi she is just setting her camera. Until she sets it, you can just let us know if you have any question or query. अच्छा, there was a question कि क्या soap base कहाँ गया? Okay. Yes, ma'am, if you are going to add all these things तो वो बिल्कुल dissolve होगा, but there are different grades of it.
जैसे यहाँ पे there was a question कि what grade of materials we have to use. So remember, you always have to use cosmetic grade materials. आप cosmetic grade materials ही use करेंगे. आप ऐसे कोई भी वो मटेरियल नहीं यूज कर सकते हैं जो आपको नॉर्मल उसमें मिलता है. ओके. Entertainment and confession, we will let you know कि वो how much is 5 to 7%. 5 to 7% इस चीज पे डिपेंड करेगा कि या इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप वो क्या कर रहे हैं, मतलब कितना आपका वेट है सोप का या कितना आप मटेरियल वो कर रहे हैं. ओके. Arohi, I think you are on. Yeah, now you're fine. Okay. I hope it is clear. Yeah, it is absolutely perfect. Okay, so melt and pour, in melt and pour, we have so many different designs or customizations that we can do. What we do here is we take a board like this, okay, any cutting, chopping board. We have a base like this, and we have to cut it in even cubes, okay, as small as you can make, because it will be easier to melt. Like this we have to cut, so it will be easier to melt even cubes. Okay. तो अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने अपना सोप बेस लिया है और अपने सोप बेस को कट कर लिया है हम लोगों ने. अब ये जो हम लोग ने कट किया, आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है ताकि ये इजी हो हमारे लिए मेल्ट करने के. यस अरुण. Okay, next we have this electronic weighing machine. See, this is kind of necessary for your soap making. Okay, we take a microwave safe bowl like this, and we'll measure our soap base. One of the first that we will be doing, one of the first techniques we will be doing is a watermelon soap. Okay, for that, if you have seen watermelon, it has 3 layers: a red, a white layer, and a green layer. Okay, very thin white layer. So we are going to achieve something like this. Okay, for the ease of this video, I have already measured soap. Okay, we generally make soaps in silicone molds like this. These are the silicone molds. We are going to make our watermelon soap, which is a layered soap. Okay, layered soap in this. So for this, we are going to be needing 3 types of layers, 3 types of different soaps. So first layer will be the red layer. Okay, this will be like each mold contains 100 grams. So first layer will be 60 grams. This will be the red layer. Okay, second layer will be the white layer, and the third layer will be the green layer, that will be around 20 or 30 grams. Okay, so we'll start by melting our soap base. Okay. सो आज जो हम सोप बेस, सबसे पहला जो सोप बेस हम सीखेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सोप बेस है और ये होगा एक वाटरमेलन सोप बेस. सो जैसे आपने वाटरमेलन में देखा होगा, सबसे पहले रेड होता है, उसके बाद वाइट होता है, देन उसके ऊपर ग्रीन होता है. तो सेम वे में हम भी यहाँ क्या करेंगे, हम अपने सोप बेसिस को लेंगे एंड उनको मेल्ट कर देंगे. ओके, तो हमारा सबसे मोटा जो लेयर होगा वो हमारा रेड वाला होगा, अराउंड 60 ग्राम्स होगा. फिर उसके ऊपर हमारा एक वाइट लेयर होगा पतला सा, उसके ऊपर हमारा एक होगा ग्रीन लेयर. ओके, Aruhi, there was a question. Yeah. That what is the soap base that you're using? Is it clear one? Is it the white one? Which one you're using? See, the red base, red layer that is made, we'll make it from clear base. You can make it with any base, it's no problem. It depends on your choice. If you use the white base like this one, this is the white base, so you will get pastel colors, light colors. But if you use clear base like this is the clear base, you get bright colors. So today I am using for this watermelon, I am going to be using
the clear base. This is my 60 grams clear base melted. I just put it in the microwave for like 20 seconds. It's very less quantity. So I put it in the microwave for 20 seconds. Don't let it overboil. Just stop it in 10 seconds if you want, and check that. Don't let it overboil. Okay. I have this spoon. I'm going to add my fragrance to this. These are the fragrances that we get in the market. These are soap fragrances. Okay. Generally, the rule of the thumb is for 100 gram soap. Okay, for 100 gram soap, not more than 1 to 1.5 ml of fragrance oil. Okay, again, इससे ज़्यादा use करने पर what will happen is the soap will stop lathering. Okay, so I'm going to be taking 1 ml of my fragrance oil and I'll put it in this. Okay. Now I have this red color. Is it visible? Yes. I have this red color. These are liquid colors, soap colors. I am just going to put a drop or two in this to make. How strong is your soap color? That will depend on the quality that you purchase. Some people sell very cheap quality, so you have to see that the soap base is of good quality. Okay, now in the watermelon, real watermelon, what we have are small black seeds, right? So for these black seeds, I am going to be using these black poppy seeds. Okay, kalonji ke beej jisko kehte hain. I'm going to be using these seeds as the seeds. One more thing. I have this rubbing alcohol. This is used if you're making soap commercially. This will be very, very helpful. But if you're using soap for just yourself, making soap just for yourself, so this will not be necessary. But I would definitely recommend to buy rubbing alcohol. This is also called isopropyl alcohol. Okay, you get easily in medical shops or on Amazon. Okay. Okay. So अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जैसे बताया था कि दो तरीके के बेसेस होते हैं, क्लियर बेस और व्हाइट बेस. तो अगर आप व्हाइट बेस यूज करोगे तो आपको पेस्टल कलर्स यानी कि थोड़े से लाइट कलर्स मिलेंगे. बट अगर आप क्लियर बेस यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे डार्क ब्राइट कलर्स यूज मिलेंगे. तो जैसे अभी हम क्योंकि वाटरमेलन बना रहे हैं यहाँ पे वाटरमेलन सोप, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले रेड जो बनाया है वो हम लोगों ने क्लियर बेस से बनाया है. तो हम लोग ने अपना जो क्लियर बेस था उसको माइक्रोवेव में 20 सेकेंड्स के लिए रखा, वो मेल्ट कर गया. उसके बाद उसमें हम लोगों ने ऐड किया है लिक्विड कलर्स. ये जो लिक्विड कलर्स हैं ये कॉस्मेटिक ग्रेड के हैं एंड ये सोप लिक्विड कलर्स हैं जो नॉर्मल आप केक्स वगैरह में यूज करते हो, ये वो कलर्स नहीं है. ओके, सो आपने इसमें रेड कलर ऐड किया एंड उसके बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वाटरमेलन में थोड़े से ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स भी होते हैं. तो अब वो सीड्स के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से कलौंजी. कलौंजी आई थिंक सभी जानते होंगे, आप कलौंजी ऐड करोगे इसमें सीड्स के लिए. सो हम लोग ने कलर ऐड किया, हम लोग ने कलौंजी इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे एंड देन उसको आप डाल सकते हो अपने जो सिलिकॉन मोल्ड है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप कमर्शियली इसको बनाने वाले हैं एंड आप इसको बेचने वाले हैं तो आपके पास रबिंग अल्कोहल होना चाहिए. रबिंग अल्कोहल का साइंटिफिक नेम होता है आइसोप्रोपाइल. ओके, तो आपके पास आइसोप्रोपाइल होना चाहिए एंड आपको ये बहुत इजीली किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा. मेडिकल शॉप पे नहीं जाना चाहते आप, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा. हर चीज बहुत इजीली आपको मिल जाएगी. प्लस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या मुझे रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ मिलेगा. तो यस, आपको रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ दोनों ही ऐप पे मिलेगा. आप जाकर के चेक कर सकते हैं, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप के ऊपर. एक बार सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद रात में 9 बजे तक रिकॉर्डिंग्स भी ऐप पे अपलोड हो जाएंगी.
Okay, moving on. Over to you, Arohi. Okay, so this soap base is melted. This soap base gets hard very fast. So if in case you find that it has hardened up and you are not able to work with it, just pop it into the microwave for 5 to 10 seconds and it will remelt. No problem in that. Okay. So I have put poppy seeds in this. Now I am pouring the first layer. Just we need to pour. Okay. So, Arohi, Now, there was a question coming a lot. Why are we using rubbing alcohol? What is its use? so can you see the small white bubbles in this? Yes, Small they are white visible. bubbles. Yes, yes. These are just bubbles, but as soon as we spray rubbing alcohol, these bubbles go away, right? And if you're making layer soap, this will be very helpful because we need rubbing alcohol to make the layers stick together. We don't want the layers to separate while we are bathing, right? So this will be something that helps them to stick together. Okay. So यहाँ पे हम लोग रबिंग अल्कोहल या जो आइसोप्रोपाइल है उसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब आप उस पे अपने सोप को पोर करोगे तो आप देखोगे कि उसपे छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे. तो जब वो बबल्स बन जाएंगे आपको उनको बर्स्ट करना पड़ेगा. इसके लिए आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी. और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम यहाँ पर एक लेयर्ड सोप बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएं. तो वो चिपकेंगी कैसे? वो चिपकेंगी इसी रबिंग अल्कोहल की हेल्प से. इसीलिए आपको रबिंग अल्कोहल यूज करना बहुत जरूरी है अगर आप सोप बना रहे हैं तो. यस, ओवर टू यू आरोही. Okay, I'll move this to one side. It will take around 5 minutes, less than that maybe, to harden up. We don't want it to harden up completely. Just form a thick layer, thick skin on it, so we can pour the next layer. If it will be too hot, so layers will mix together. तो वो prominent layers हमको नहीं दिखेंगी. And if it is too cold, it settles properly, तो वो layers separate होने का डर रहेगा. By the time we'll do our next soap. Next soap is the next technique, which is called as a swirl. Okay, this is a very commonly used word in the soap making process. And what we'll do is we'll take equal amounts of white base and clear base. This is like 50 grams of clear white base, and this is 50 grams of clear base. Fine. And we are going to melt it in the microwave. तो अभी हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपना लिया है व्हाइट बेस और हम लोगों ने लिया है क्लियर बेस. दोनों ही बेसेस जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी में है. मतलब कि 50 ग्राम ही हमारा व्हाइट बेस है, 50 ग्राम ही हमारा क्लियर बेस है. एंड उन दोनों को हम लोग रखते रहे माइक्रोवेव में ताकि वो इजीली मेल्ट हो जाए. So for this soap, we are going to use this mold. Okay. We can spray a little bit of rubbing alcohol on this to clear away all the impurities from this. These molds are disinfected already. They are washed properly and dried, but we are spraying a bit of alcohol to this alcohol is like sanitizer, right? हम जैसे we use sanitizer to clear away germs on our hands. This is the same way we use this alcohol to clear away all the germs or impurities from the mold. Okay. ओके, सो अभी जैसा आपने देखा हम लोगों ने अपना आइसोप्रोपाइल या रबिंग अल्कोहल जो था उसको हम लोगों ने अपने मोल्ड्स पे भी स्प्रे किया था. उससे क्या होगा कि आपके मोल्ड्स जो हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, उनमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया नहीं होगा. यस आरोही. Yes, now my bases are melted.
we are going to make a swirl. A swirl is two different colors combined. Okay, I'll show you how. We'll use this purple color. This purple color in the clear base. Okay, I'm not using the purple color in the white base. I'm using it on the clear base. So you can see the color, how beautiful the colors is with just a drop. And I'm going to match this color with lavender fragrance. Okay, this is my lavender fragrance. I'm going to take 1 ml of lavender fragrance. I'm going to put like half in this and half in this. Okay. सो नेक्स्ट जो हम सोप बनाने वाले हैं वो एक swirl सोप होगा. swirl सोप में क्या होता है कि दो डिफरेंट कलर्स को हम मिक्स करते हैं एंड देन हम उससे ऐसे swirl जैसा डिजाइन जो होता है ना वो क्रिएट करते हैं. तो इसमें भी हम वही सेम चीज करने वाले हैं. हम लोगों ने अपने दोनों सोप्स को मेल्ट कर लिया है. क्लियर सोप बेस जो था हमारा उसमें हम लोगों ने पर्पल कलर ऐड किया है, प्लस हम लोगों ने इसमें ऐड किया है अपना लैवेंडर फ्रेग्रेंस. लैवेंडर फ्रेग्रेंस हम लोगों ने जो ऐड किया है वो how much was that? 1 ml, right? 1 ml in 100 grams. 1 ml. Okay, so 1 ml हम लोगों ने अपना फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड किया है जो कि था हमारा लैवेंडर. Okay, now I'm going to pour these soaps together, okay, to create a pattern, to create a swirl pattern. Okay, now you can see the AC is on in this room, so this has clumped up a bit. No problem, I'll just pop it into the microwave for 5 seconds and it will be fluid once again. This is still liquid. The melting temperatures of both the bases are different. So this is still a bit liquid, whereas that one has clumped up. See, now it's perfect. Okay. In this technique, we need the soap bases to be as cold as they can be. Okay, without making them clump. They need to be as cold. What will happen if they are too hot? They will mix together to form one single color. But in this technique, we want them to be two different distinct colors in our soap. Okay, this technique, swirling technique, can be done in many ways. One of the way I am showing you, okay, what we can do is I am pouring both of them. एक सेकंड आरोही, आप इधर जो सेकंड नंबर वाला है उस पे आप पोर कर सकते हो क्या? बिकॉज वो थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम चला जा रहा है. हाँ, इन दिस वन. Okay. Yeah. I'll just turn this. Sure. Okay. तो आपको ये swirl वाला जो सोप है इसको बनाते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपका जो swirl हो मतलब सोप बेस होगा वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए. ओके, बहुत ज्यादा अगर गर्म रहेगा तो वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे एंड पूरा एक ही कलर बन जाएगा. तो इसीलिए आपका ये जो दोनों सोप होना चाहिए ये डिफरेंट मतलब थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए. एंड आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दोनों को एक साथ ऐसे करके, अलग अलग करके नहीं, एक साथ ही हम लोगों ने उसको डाला था अपने बेस के मोल्ड के अंदर. Okay, so I have poured both of them. See, they were quite cold, so they have two separate layers. You can see both the colors. If they would have been hot, both the colors would have mixed and it would have given just a light purple color. But these are two different. What I can do now, I can just do like this. Okay, it will give swirl, a different swirl. When I'll pop this, you will be able to see the different colors and how beautiful they look. Another way of doing this swirl, I can tell you, is you can pour the clear base first, let it cool a little bit, and then pour the white base. Okay, that will give you a different kind of swirl. Okay. तो जो दूसरा तरीका होता है हमारा swirl
सोप बनाने का। एक तो ये तरीका होता है कि आप दोनों को साथ में डाल दो। एक तरीका ये होता है कि आप पहले व्हाइट वाला डालिए, उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर हल्का सा ठंडा होने दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, बट हल्का सा बस ठंडा हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप पर्पल वाला डालोगे, एंड देन आप नॉर्मली उसको ऐसे मतलब ऐसे जैसे स्पून से किया ना, वैसे ही आप वापस से कर दोगे तो आपको वो एक डिफरेंट तरीके का सोल देगा। Okay, so by the time our swirl soap settles, we can go ahead with the second layer of this watermelon soap. See, the first layer is quite set. You can put your finger on this. It is soft, but it is not breaking. Okay, this means that it is perfect for the second pour. I have my 10 to 15 grams of white base melted for a thin white layer. Okay, I'll just generously spray rubbing alcohol on this. I'm not putting any fragrance oil in this because I have put fragrance oil in this layer, and I'll be putting fragrance oil on the other layer also. So it's okay to not put fragrance oil because this will be a very thin layer. Okay, so नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अपना जो रेड वाला बेस हम लोग ने बनाया था वो अब आप देख सकते हो कि वो थोड़ा सा सेट हो गया था। मतलब हल्का सा सॉफ्ट था, बट वो ऐसा नहीं था कि एकदम सॉफ्ट है आप पूरी फिंगर ऐसे अंदर डाल दोगे। हल्का सा सेट हो गया। सब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना जो व्हाइट बेस था वो डालेंगे ताकि एक हल्की सी हमें पतली सी लेयर मिल जाए व्हाइट बेस की। बट जब आप व्हाइट वाला डालोगे उससे पहले थोड़ा सा आपको आइसोप्रोपाइल या फिर जो आपका रबिंग अल्कोहल जिसे बोलते हैं वो आपको स्प्रे करना है, ताकि आपकी जो लेयर है वो प्रॉपरली नीचे वाली लेयर के साथ स्टिक हो। आरोही, देयर वर फ्यू क्वेश्चंस। yeah, sure. सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि मैम जो आप सोप बेस अभी हमें बनाना सिखा रहे हैं वो कौन सी स्किन टाइप के लिए अच्छा है? See, these soaps are generally good for all skin types. Anybody can use, but if you want a bit of extra moisturizing, the white base is good. Okay, the white soap base that I have shown you, this one Okay. is extra moisturizing because it contains goat milk. Okay, and the clear one, this one is also good, but this is extra moisturizing. So if you have a bit of dry skin, always go for this. Rest the things, skin type depends on the ingredient that we use. Like for example, I have given you a list of raw materials, right? So in that it was mentioned charcoal powder. Charcoal powder is used to treat acne. It removes oils from the skin, and so it can be used for oily or acne prone skin. Again, we can use aloe vera. Aloe vera is good for dry skin. Honey is good for dry skin. Okay, like these, every ingredient has its uses, so we can put an ingredient according to that. ओके, सो जो क्वेश्चन आ रहा था कि ये कौन से स्किन टाइप के लिए, तो बेसिकली जो बेसिस होते हैं वो ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं। बट जो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो बेसिस पे ना डिपेंड करके वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो लिस्ट दी है उसमें चारकोल के बारे में भी हम लोगों ने बात की है। तो आप देखोगे कि जो चारकोल होता है वो बेसिकली हेल्प करता है आपको ऑयल रिमूव करने के लिए। तो अगर आप किसी भी सोप में चारकोल ऐड कर रहे हैं तो वो एक्ने को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए जब आप बना रहे होते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करेगा rather than depending on the soap basis. The list is already given in the PDF. You can go on the app and you can check. ऐप पे जो PDF बना हुआ है उसमें लिस्ट ऑलरेडी शेयर्ड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। Yes, Okay. One more thing, this question, that what ingredients we can use for different skin type. One more thing, this is fragrance oil, as I have mentioned. You can also use essential oils in soap. Now, what are essential oils and fragrance oil? Fragrance oil are man-made. Okay, they are made in a factory. Essential oils are made
naturally extracted plant derivatives. They are extracted from plant. Okay, so these essential oil also help in for these specific beauty concern. Okay, like if you are very acne prone, so you should use tea tree essential oil. Okay, and if you want a calming fragrance and you want to relieve your aches, so you can use the lavender essential oil. Same way, I have given a list of different essential oils and their properties also in the PDF. You can check it out, but please be cautious in using essential oil. Again, not more than 1 to 2% of essential oil in 100-gram base. I am saying be very cautious about essential oil because essential oil contain medicinal benefits. So as you are cautious while taking any medicine, please be cautious in using essential oil also. Have a thorough study before using essential oil. Please start with fragrance oil, and if you have conducted good study, then only jump onto essential oil. Today I'm only using fragrance oil and not showing essential oils. Okay. तो अभी आपने जैसे देखा कि हम लोग यहाँ पे फ्रेग्रेंस ऑयल्स यूज कर रहे थे, वैसे ही सेम वे में एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो कि होते हैं। अब फ्रेग्रेंस ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स में डिफरेंस ये होता है कि जो फ्रेग्रेंस ऑयल होते हैं वो बेसिकली मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज में बनती हैं एंड उसमें सिर्फ आपको फ्रेग्रेंस मिलती है। बट जब हम बात करते हैं एसेंशियल ऑयल्स की, तो एसेंशियल ऑयल्स नेचुरली डिराइव किए जाते हैं या लिए जाते हैं या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो प्लांट्स होते हैं इन सब से। तो उनमें क्या होता है कि वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है तो उनको एक ऐसा सोप यूज करना चाहिए, उसमें वो अगर अपने सोप में टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे तो उनको हेल्प करेगा वो एक्ने में। मान लीजिए किसी को एक कामिंग इफेक्ट चाहिए, मतलब आपकी बॉडी दर्द हो रही है एंड आपको थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट चाहिए, तो आप उसके लिए लैवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। ये भी पीडीएफ में दिया हुआ है कि कौन सा एसेंशियल ऑयल किस चीज के लिए यूज होता है, तो आप पीडीएफ में चेक करें। ऑल्सो लास्ट थिंग, एसेंशियल ऑयल्स को बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए। आप उसको 1 से 2% से ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं अपने बेसिस में, यानी कि सोप्स में। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप एकदम कंफर्म हो जाए फ्रेग्रेंसेस के साथ कि फ्रेग्रेंस ऑयल आप प्रॉपर्ली यूज कर ले रहे हो, तभी आप जाइएगा एसेंशियल ऑयल पे। अदरवाइज एसेंशियल ऑयल्स पे मत जाइए बिकॉज वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड भी होते हैं। ओके, यस आरोही। Okay, we'll do our next technique. What I'm going to teach for my third demo is what is called a tie and dye technique. Tie and dye technique, in this technique, I'm going to use a mix of 3-4 color in this white base. You can do it with clear base also, but white base gives more pretty colors, I believe. So for this, I'm going to use green, blue, and a bit of red color. Okay. So in any of the mold, you can do it in any mold. I'm using this lion mold. Okay. I'm going to put a drop or 2 of blue color. Okay. A drop. Just a second. Of red color, and I'll use this green. Okay, so I have put 2-3 drops of different colors to have that tie and dye effect. Now I have melted. This is 100 grams of goat milk base or white base. I have melted it and I have let it cool a bit. As I've already told you, goat's milk base take a little bit of more time to cool down. Okay, so I had melted it a while back and they are much cooler than before. Why they need to be a bit cooler? Otherwise the color will merge in itself. So okay, and now that they are much cooler, this base is much cooler, the colors will not merge too much. Okay, so just
very slowly from the side. I'm going to pour. Okay. So next आप देख सकते हैं. Yes, Divya, I totally agree with you. Okay, so next जो आप देख सकते हैं हम बना रहे हैं, इसे कहते हैं टाई एंड डाई सोप. टाई एंड डाई सोप में क्या होता है कि थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूज होते हैं. तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने जैसे 2-3 कलर्स यूज किए हैं. हम लोगों ने ब्लू यूज किया है, हम लोग ने आई थिंक रेड यूज किया है. तो आपको क्या करना है कि आप थोड़े से कलर्स को अपने मोल्ड पे ही डालेंगे. 1 या 2 ड्रॉप्स आप ऐसे करके डालोगे. उसके बाद जो सोप बेस होता है, वाइट सोप बेस, आप क्लियर के साथ भी बना सकते हो बट वाइट के साथ थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है. सो आप वाइट बेस को मेल्ट करिए, थोड़ी देर वेट करिए. उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपना वो, मतलब मोल्ड में डाल सकते हो आप, जैसे अभी आप देख सकते हो कि आरोही ने डाला है. एंड थोड़ी देर वेट इसलिए करना है आपको, अदरवाइज अगर आप एकदम गरम गरम डाल दोगे तो वो सारे कलर्स जो आपने अभी नीचे मोल्ड में डाले हैं वो सब के सब एक साथ ही मिक्स हो जाएंगे. ओके, यस आरोही. Okay, so this is done. I'll move it on the side and we'll pour the last layer of our watermelon. Okay, in this I have all in this base, this tie and dye one, I have used 1 ml of vanilla fragrance oil. Okay, now for this third layer I'll be melting around 20 to 25 grams of clear base again. This will be our third layer. This has cooled down quite a bit. It's not melting. Okay, just a moment. Okay. So till then, Arohi, there were a few questions. I think we can take them. Just a second, Saloni. This has melted. We'll Sure, pour sure. it and we'll take the questions then till the time they are set. Okay. Okay. So I am putting just 1 to 2 drops of green color in this. So you can see हम लोगों ने अपना जो क्लियर बेस होता है उसको मेल्ट किया था अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स के लिए. उसके बाद हम उसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन कलर्स. ये हमारा जो वाटरमेलन सोप बन रहा था उसका लास्ट लेयर है. I'm adding सुंदर fragrance लग रहा oil है in मतलब. this. Okay, which fragrance oil are we You adding? can use any fruity fragrance oil, but I have this watermelon fragrance oil. So I'm using this. This gives a very genuine watermelon feeling. So this layer is ready. Now I'm going to pour rubbing alcohol on this and just pour it. Okay. ओके, सो यू कैन सी कि हमारा जो लास्ट लेयर था ग्रीन वाला हमारे वाटरमेलन सोप का, उसको हम लोगों ने डाल दिया है. एंड एज यू कैन सी उससे पहले भी हम लोगों ने रबिंग अल्कोहल स्प्रे किया था. क्यों स्प्रे किया था? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सारी लेयर्स एक साथ एक दूसरे से मिलकर रहे, मतलब चिपक के रहे. ओके. अरे आप इतने प्यारे प्यारे सोप्स बना रहे हो ना, मैं इन सोप्स को कभी यूज ही ना कर पाऊँ. मैं इनको अपने अलमारी में सजा के रख. They look so beautiful. Oh, please don't do this. But actually, I get this so much. Ki, ma'am, we don't want to use these soaps. They are so pretty, but please don't do it. Use them. So nice to use. You love them, and once you make it yourself, you love them more. So That is true. these are the 3 demos that we have done. I hope all 3 are visible. Yeah, right. Yes, all 3 are visible. This is the swirling technique. I'll show you. Isko unmold karke I'll show just in a minute. This is the watermelon soap. These have layers. Okay. This is the layering technique, and this is the tie and dye technique. Okay. By the time they set, if you have any questions for me, we can take this question. Yes, there are a few questions. So there's a question कि मैम अगर हम ये चीजें किड्स के लिए बना रहे होंगे तो हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
Should I just give me a minute? I'll switch on my camera. Okay. Okay, works. So yes, तब तक आरोही अपना कैमरा सेट कर लेंगी. We will just wait for a minute. Yeah. Okay. Am I visible? Yes, you're absolutely visible. Okay. For kids, see, these soaps are absolutely fine for using for kids above 1 year of age. Okay. Why 1 year of age? Because these soaps are not tear free. Okay. So generally for babies we use tear free formulas. So these soaps are not tear free. So I would recommend to use it for kids above 1 year. They have no harmful chemicals, no preservatives. So easily we can use on kids. ओके सो आप इनको किड्स पे भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि वो 1 साल से ऊपर हो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हम टीयर फ्री वो यूज करते हैं, वरना उनकी आंखों में लगेगा तो उन्हें लगने लगेगा. अदरवाइज ये सबके लिए अच्छा है. ओके सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ डू वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द सोप. Okay, I was getting to that part. See, costing आपकी depends on the soap base. Soap base, आप कितने का ले रहे हो soap base? What is the cost of your soap base? Generally, this soap base in the market you can get from anywhere from 150 rupees per kg. This is a 1 kg block. From 150 rupees per kg to 400, 500 rupees per kg. Okay. But generally a good soap base, 1 kg soap base would cost you anywhere between 250 to 300 rupees. Okay. And in this 1 kg soap base, if you're making 10 soaps of 100 grams, if it is like 300, so 30, if it is like for 300 rupees, then 30 rupees per bar it will be costing. And if we add the cost for the colors and the fragrance oil, because we are using such small quantities, it will be like 3 to 4, 5 rupees. So 35 rupees per bar, I can tell you, it will cost you for a good quality soap bar. Okay, and then उसके ऊपर फिर they can put the margin की मतलब how much they want to sell. Yeah, for selling again, 300 rupees, जैसे मैंने आपको बताया, that can be lowered if you buy in bulk. Obviously, anything if you buy in bulk, that quantity, that price will reduce. Okay, so the 300 quality base, if you buy in bulk, you can get for maybe 250, 200. So the cost price will reduce, and however margin you can add on your soap base. Okay, per soap जितना भी आपको margin रखना है, you can. I'm sorry, just give me a minute. No issues. Okay, so जब भी हम Yeah, fine. Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. I'm so sorry. Okay. So where was I? Yeah. So जब आप बात कर रहे होते हैं उसकी सोप बेसिस की, तो ये डिपेंड करता है सोप बेसिस पे कि आप कितने उसमें कितना आपका सोप बेस का कॉस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट करोगे अपना हर चीज का. ओके. Okay. Last thing is the packing. Okay. Packing is very important in soap. As soon as you demold your soap, this is, सबने देखा होगा, this is a cling film. We need to wrap it up in a cling film because soap, these handmade soaps sweat a lot. Small water droplets आ जाती है soap पे if you don't wrap it up. Especially in this humid condition, water पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, and it is not harmful at all, but it doesn't look very nice. So just wrap it up properly, tightly in a cling film like this, and you can keep it. This soap base are now second shelf life of this soap base.
Yeah, a shelf like this soap base you can use for years and years, 4 years, 5 years, 6 years, 10 years even. What will happen after a year or two, the fragrance will start fading and the color will start fading, but the soap is still usable. So while selling commercially, I would suggest to tell your customers that this soap has a shelf life of 1 to 1.5 years. ओके, सो जो ये आपका सोप बनेगा ये आपका कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए चल जाएगा। उसके बाद उसकी जो फ्रेग्रेंस वगैरह है वो थोड़ा सा वो हो जाती है, कम होने लगती है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। तो इसलिए आप जब भी सेल कर रहे होंगे तो आपको इसको सेल करना है अराउंड ये बोल के कि वो 1 से 1.5 साल चल जाएगा। आई थिंक 1 से 1.5 साल किसी भी सोप का काफी टाइम होता है। ओके, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. One is that can we use essential oil and fragrance oil together? Yes, you can definitely use essential oil and fragrance oil together. But again, the amount that can be used is 1 to 2% of both together. Like 1 to 2% in 100 gram would be 1 to 2 grams or 1 to 2 mls. Okay, so both combined, like if you're using lavender essential oil, use 1%, and lavender fragrance oil also use 1%. So it will be 2 gram or 2 ml, and use that much only, not more than that. Okay. Also, ladies, understand that we have a very specific session here. I know you all are very curious for a lot of soaps and lot of things, but understand that we will only be taking the questions that are related to the session. So if in case आपको सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें बताइए, हम बहुत खुश होंगे उसको आंसर करके। बट आई थिंक उससे बाहर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि टाइम स्पैन भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ओके Okay. We'll unmold the soap. Okay, sure. The soap is generally we let it set for a couple of hours, but as we have a time constraint, we'll be unmolding it. Please don't unmold before before 1 or 2 hours. See, this is the swirl. See how pretty it looks. थोड़ा सा left, right. Yeah, sorry. Perfect. Can you see? Yes, and I think it looks so beautiful. You can use so many different colors in this, so many fragrances, and best part is every soap will be different. Every swirl design will be different in this. So even if you make one single batch, if I would have made all these soap, all 8 soaps in this, all would have looked different. Okay, because every swirl is different. Okay, next is this. Okay, let's unmold. It's a bit still wet. See, we can use a bit more colors. I'll show you one more piece of this. See, I've made this previously. I've used a bit more colors in this. You can use again 2, 3, 4, 5 different colors and get so many different patterns in this. Is it visible, right? Yes, and it looks so beautiful. Just a second, Arohi. Pooja, I will request you कि अभी क्योंकि हमारे पास limited time है, हमें और भी चीजें बतानी है. I'm really sorry, we won't be able to take this question. If you have any question related to the session, we'll be more than happy to tell you. Yes, Arohi. Okay, now this last soap, I'll unmold. It's very easy to unmold. Just push it and pop it. Now look. Oh my God, this one is my favorite. And this is the watermelon. Again, this design can be done in any of the mold. You can use a square mold. You can हल्का सा लेफ्ट में, एंड आप वो लेयर्स दिखा सकते हैं हल्का सा लेफ्ट में करके, और थोड़ा सा क्लोज ले आएंगे हम, और आप पीछे से हाथ लगा दो, वो क्या हो रहा है ना कि वो दिख नहीं रहा. ओके थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा. या परफेक्ट. सो यू कैन सी हियर कि हमारा जो वाटरमेलन सोप है, आप इसकी 3 लेयर्स बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, एंड ये लिटरली बिल्कुल वाटरमेलन जैसा दिख रहा है. तो यस, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. Okay, so these are the 3 different soaps that
we made today. Any other question? Yes, there was a question that do we need to, if we want, can we keep them in the fridge also to cool down or just outside? You can keep it in the fridge if the weather is too hot, but generally they set by themselves in an hour or two, so it's not necessary. But you can definitely pop it in the fridge, not the refrigerator, not the freezer part, only in the fridge part. You can definitely pop it, but it will take like 10 minutes to set, and then you can take it out. But generally it's not needed much. Okay. Okay, so there was one more question जो कि हो गया. Give me a second. Yeah. Just a second. We'll take one last question. Okay. Yeah. So there was a question that can we add glycerin also in the soap? It's not needed. See, this soap, this base already contains glycerin. The saponification process, if you remember that we talked earlier, is basically the byproduct of the saponification process is glycerin. So this soap already contains too much of glycerin. The sweating that I was telling you about, the soap sweating, it happens because of the glycerin. Glycerin को आप अगर बाहर environment में छोड़ दोगे, it will attract moisture. Because of that, the soap sweats. So you shouldn't add glycerin, and as it is, you should never add any liquid ingredients. Okay. So yes, I think we are done with the session. We have shown them everything. So yes, ladies, yes, is there anything left, or we are done with everything? Arohi? Okay, I hope you enjoyed this session, and do let me know how you liked my first live session. And thank you for being part of this. Bye-bye. Bye, Arohi. Thank you. Bye, Yes, Saloni. ladies, this was our session on how to make the soap, and we hope that you all have liked and loved the session. If you have, please go on Google Play Store and rate us and review us. After that, the PDF and is uploaded on the app. You can just go on the app. You can check the PDF. पूरा PDF app पे दिया हुआ है. Uh, in case you want to watch the recordings too, recordings भी रात में 8 बजे तक ऐप पे अपलोड हो जाएंगी, आप तब देख सकते हैं. Okay, so yes, I hope that you all have liked and loved the session. I hope to see you all in some other courses. Till then, please like the video, subscribe to the YouTube channel because we come live every week twice, and so that you do not miss anything. So bye everyone, hope to see you all in some other courses. Bye bye. Bye Arohi.